Hello everyone, welcome to this demo lecture. I am Dr. Jeev. This demo would be beneficial for every student who is preparing for any kind of competitive exam. So we have this list of major exams that are conducted in India. So at the PG level in geology, you have these main 4 examinations, and at the UG level, you have these 2 main examinations. Now about this presentation, so we have divided this presentation into 2 parts. The first part deals with the nuances that a student faces when he or she is preparing for these examinations. I would be dealing with this part. The second part of this presentation deals with the solutions that we as an organization provide to you as a student so that you can excel in your target examinations. The solution part would be dealt by my colleague Vicky. Now before we dive into the nuances, I would like to discuss a concept from political science that is called Primus inter pares. So Primus inter pares translates to a first among equals. So what this means is that if you have a group of people, there is a possibility that one individual out of that group holds a certain authority over the entire group. For example, if you look at the Parliament of India, so every member of parliament holds the same power. They are chosen using the same general elections. But there is one person called the Prime Minister who holds a certain authority over the rest of the minister. He has some extra powers. So the Prime Minister can be called as the primus inter pares of our Indian Parliament. Another example would be the captain of any sports team, because the captain has a certain authority over the other players. Though the captain is also a player, he is the first among those equals. So the captain can be said to be the primus inter pares. Now why is this political concept very important to you in your presentation, in your preparation? So when you start your journey, when you start preparing for these examinations, that is where this concept will help you. So if you look at these 2 pie charts, so the pie chart on the right is the PYQ analysis of the UPSC GSI prelims exam. You can see all the subdomains of geology, they hold an equal chunk of the pie. But if you look to the pie chart on the left, that is the PYQ analysis of IIT JAM examination, you can see there are certain subdomains of geology such as mineralogy and structural geology that are holding a bigger chunk of the pie. And there are some slivers, for example, engineering, geology and all, which are holding a minor amount of that pie. This shows that not all of those subdomains are having the same authority. Some overshadow the others. Now, if a student has downloaded for example, he has downloaded the syllabus for IIT JAM. So mineralogy accounts for 3 lines in that syllabus PDF. Metamorphic petrology also accounts for 3 lines. So the syllabus is trying to tell you that all these subdomains of geology are equals. But the PYQ analysis is telling you, no, mineralogy is the primus inter pares in IIT JAM followed by structural geology. So you have to keep this in mind. You have to keep in mind that the one size fits all approach might not work for you. For example, if you are preparing for IIT JAM or if you are preparing for CUET, you need to keep in mind that what is the PYQ analysis of that examination? What are the primus inter pares? That means what are the subdomains that exert a lot of questions from the PYQ pool, and you need to prepare in that fashion. You need to make sure that your target examination and your way of preparing, they fall in the same line. Now let us look at primus inter pares on another level. So you have this question from stereographic projections from structural geology, and you have such multiple questions from StereoNet. All of them have been asked in IIT JAM examination from year 2014 till year 2023. There are some years in which it was not asked, but you can see it has a continuous lineage of being asked in that examination. So you can be very sure that in the next IIT JAM there may be a question from stereographic projections. Another example would be from JAM using the concept of geomorphic processes and the corresponding geomorphic landforms. So you have multiple such questions from IIT JAM. Another example would be from the GSI mains examination. So you have multiple questions from river morphology from the glacial and fluvial processes chapters.
Now what this means is that Primus inter pares is working on two levels. It was trying to tell you what subdomains of geology were important. Also, it is trying to tell you that not the entire book is important. You don't have to read the entire book from cover to cover. There are some chapters which hold a lot of authority in the PYQ pool, and there are some chapters which, if you don't have time, you can try to skip them. So we have Primus inter pares at two levels. Now there is another nuance which I guess is this is the majority of students face this nuance, is the abundance of material in the market. For example, if you take mineralogy, you have these three standard books. You have the book by Klein, you have the book by Putness, and because optical mineralogy is not very well written in these two books, people tend to focus upon Ness's book for optical mineralogy. After you have done with these three topics, maybe you have a certain understanding of mineralogy to give your target examination. But if you add all these three books, these are around 1500 pages. So that is around 2.5 months of preparation. When you are doing 20 pages a day, you are understanding 20 pages a day. Now, for example, if there is a student who has just started his competitive journey and he is targeting some examination in 2025, so it is not possible that he can give 2.5 months to just one subject, that is mineralogy. It is, if he does that, there won't be enough time to do other subdomains. So that is one big nuance that a student faces. Now I would like to call Vicky, who will deal with the solutions that we as an organization will provide to you, so that you can counter these nuances and excel in your target examinations. Hello everyone, myself Vicky Shankar. So till now we have talked about all the nuances that are needed to be taken into consideration while preparing for the exams. Now I am going to talk about all the solutions that we as an organization are going to provide you. Alright, so फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज ऑफ अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो होता क्या है, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी में कूदते हैं तो फर्स्ट हम एक बेसिक बुक लेते हैं, उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को रेफर करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी ट्राई टू सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑफ दैट टॉपिक। अब इन तीनों में से जो हम इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, वी ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। ऑलराइट, अब ये सारा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन शुड स्ट्रिक्टली अडहियर टू द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम। इसमें होता क्या है, इसमें you tend to consume a lot of your time of preparations। अब हमने क्या किया है, हम कैसे इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वाया द हैंडआउट्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। अब जो हमने यूट्यूब लेक्चर्स, हम जो वीडियो लेक्चर्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हैंडआउट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो हमने इन सारे रिसोर्सेज को थरोली स्टडी करने के बाद बनाया है। इवन वी हैव रेफर टू द रिसर्च पेपर्स व्हेन एंड इफ रिक्वायर्ड, और हमने पीवाईक्यूज लास्ट 20 इयर्स के अच्छे से एनालाइज करके जहां जहां पे उनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत थी, वी हैव डन दैट। एंड आफ्टर ईच क्लास, ईच एंड एवरी क्लास, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ हैंडआउट लाइक दिस, जिसके अंदर वो पर्टिकुलर टॉपिक विल बी होलिस्टिकली कवर्ड। एंड उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी आप टारगेट एग्जाम अपना फॉलो कर रहे हो, कि उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और हैंडआउट में ना हो। ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज दी टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज कोई साधारण टेस्ट सीरीज नहीं है, दे आर डिजाइंड वेरी साइंटिफिकली। हाउ, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। देखो, हर वीक, एवरी वीक, what we are going to do, we will be taking 2 subjects at a time. Say for example physical geology and mineralogy, we begin with them, and after every week we are going to provide you with a test series of physical and mineralogy containing 100 questions each. Alright, when we are done with a complete subject, after that we will provide you with a mega test series of that entire subject, and once you are done with that, we are going to track your progress. After tracking your progress and analyzing it, we are going to come up with a individual photo profile of that student. उसकी मदद से हम करेंगे पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में? लेट मी इलैबोरेट। सी, से फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट ए कम्स एंड appears for the mineralogy test। अब उसका मिनरोलॉजी के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट इज ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, सेकंड इज क्रिस्टलोग्राफी, एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी। आफ्टर एनालाइजिंग हिज परफॉर्मेंस, वी फाइंड दैट ही इज वेरी गुड इन डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी, बट नॉट एज गुड एज इन
crystallography, but the exam that he is targeting requires optical mineralogy at a very good level but is not focusing that much on descriptive mineralogy. So हम करेंगे क्या, हम उस स्टूडेंट को ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसके पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज में उसको करवाएंगे. विल बम्बार्ड हिम विद दीज क्वेश्चंस. उससे होगा क्या, ही विल गेट वेरी कंफर्टेबल इन दैट सेक्शन और उसकी जो वीकनेस थी इट विल टेंड टू कन्वर्ट इनटू हिज स्ट्रेंथ. फाइनली होगा क्या, उसकी जो प्रोफाइल इस तरीके से दिखती थी विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस, जो कि उसके टारगेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट है. ऑलराइट, सो फंडा इसका पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज का फंडा यही है कि आपकी जो वीकनेसेस हैं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. हर एक बच्चा वो प्रैक्टिस करेगा जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो नहीं जिसमें एग्जाम चाहता है कि आप अच्छे से परफॉर्म करो, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है. ऑलराइट, one more important thing is memory retention. अब होता क्या है, say for example you have learned something on day 0, after 6 days this curve shows that after 6 days it is completely vanished from our memory. बहुत तेजी से हमारी मेमोरी से वेन आउट होता है. कैसे इसे टैकल किया जाता है? वाया रिपीटेड रिविजन्स. साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि अगर आप रिपीटेड इंटरवल ऑफ टाइम में रिवाइज करो, जिसके बारे में हम और बात करेंगे डिटेल में, तो वो चीज इट टेंड्स टू मूव टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ऑलराइट, how are we going to do that? See, you might have heard about Hollandite. ठीक है, इक्वस, ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स जियोलॉजी में आपका पाला हमेशा पड़ेगा इससे. अब ये वाली टर्म्स हम पढ़ लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं. ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देखा आपने, हैंडआउट पढ़ा आपने एक बारी, यू आर डन विद देम. बट ये जब हमारे एग्जाम में हमसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रिकलेक्ट कि वो क्या था. अब इन चीजों को लर्न करने का एक टाइम टेस्टेड मेथड है जिसको हम बोलते हैं SRS फ्लैश कार्ड्स. इसमें क्या होता है, एवरी डे वी विल प्रोवाइड यू विद फ्लैश कार्ड्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन. हर रोज जब आप इस चीज को देखोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल जो मुझे लगता है वो है सुनामी. सुनामी इज अ जापानीज वर्ड. अगर मैंने आपको वैसे बोला होता कि जापानीज वर्ड आपको याद करो तो आपको बहुत मुश्किल हुई होती उसे, बट क्योंकि ये वर्ड हमने अगेन एंड अगेन हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो इट हैज नाउ बेसिकली मूव्ड इनटू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी. इवन अ लेमैन नोज व्हाट अ सुनामी इज. तो उसी आइडिया पे हम SRS फ्लैश कार्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो डिफिकल्ट चीजें हमें लगती हैं, जो एज दिलाएगा ना आपको एग्जाम में, वो वही डिफिकल्ट चीजें हैं जो बाकी का क्राउड नहीं करके जा रहा है, जो आपका कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, बट यू आर कंफर्टेबली डूइंग दैट. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एम आई फोकसिंग मोर ऑन दिस. इतना क्या है हर एक नंबर के पीछे भागना, इतना एम्फोसिस क्यों है? इक्वस पता होना चाहिए, हॉलैंडाइट पता होना चाहिए, सारी ओर्स आपको पता होनी चाहिए. क्यों व्हाई डज दैट एवरी नंबर मैटर्स? इज बिकॉज in these competitive exams जहाँ पे कट थ्रोट competition है, even a single number has got the potency to completely disrupt your entire year's preparation. आपके पूरे साल की तैयारी को एक नंबर अच्छे से सबोटाज करके रख सकता है. So we are not going to take that risk and we won't be allowing you to do that as well. One more important aspect जो मुझे लगता है कि बहुत ignored aspect है but must be focused upon is the circadian rhythm. जो हम अपनी बॉडी को जिस रूटीन में डालते हैं, देखिए हमारे पास हमेशा दो तरीके के लोग होते हैं, वन इज अर्ली बर्ड, अनदर इज नाइट आउल. ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल एक नाइट आउल है जिसने पूरे साल तैयारी करी, बट ही इज वेरी कंफर्टेबल, ही और शी इज वेरी कंफर्टेबल स्टडिंग इन नाइट आवर्स. तो उसकी जो efficiency है ना, it comes into those night hours. When such a fellow is asked to perform on the examination day at 9 AM, तो he is not able to perform on his maximum efficiency. And if you do not perform on your maximum efficiency on such an important day, जो कि आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि it is a chance which we should be allowing to take. हम क्या करेंगे? How are we going to help you? So we have decided that in our offline center we will basically make you write examination in those exam like conditions. जैसे कि GSI का एग्जाम है, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है, एक मेजर प्रॉब्लम जो GSI में लोगों को रहती है वो ये है कि एग्जाम जब हमारे सामने आता है तो वी आर नॉट एबल टू राइट द एंटायर पेपर इटसेल्फ.
in 3 hours, in those 3 hours, we are not able to, attempt all those 30 questions because of lack of practice. So we will make you sit on Friday, Saturday and Sunday in the similar way GSI does, and ask you to write two papers in a single day consecutively on Friday, Saturday and Sundays. All right. उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब हम आपको 15-20 टेस्ट इस तरीके से इस पैटर्न पर प्रैक्टिस कराएंगे, गेट की एग्जामिनेशन सुबह होती है तो हम आपको सुबह यहाँ पे बिठा के मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे. When you appear on the examination day, on that day you will be in your maximum efficiency. आपका जो ब्रेन होगा ना अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा होगा, and you will be very comfortable giving the exam. Another thing, this book, PYQ book, which has been always in demand, जो अभी तक नहीं थी मार्केट में, we will be providing you with this book in a couple of months. These are our profiles. So if you have got any other queries, you may contact us on the given information. Thank you all.